हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। जैसे कि आप जानते हो, मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो मराठी में बनाया था जिसको आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ऐसा ही रिस्पांस बना रहे। इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू आई एम अपलोडिंग ईजी ट्यूटोरियल फॉर ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट्स लेसन वाइज वेरी सुन, which helps to clear your concepts and you can get deep knowledge. But students, before starting tutorials, मैं कुछ रियल फैक्ट्स डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट हाउ एंड व्हाट यू स्टडी और हाउ एंड व्हाट यू लर्न अप टू नाउ। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा। इन दैट I clearly mentioned after computer degree what you become, टाइपिस्ट या प्रोग्रामर। मैंने ऐसा क्यों कहा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो और आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करो। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो सो यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई न्यू अपलोडेड वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, आप क्या बन गए और क्या बन रहे हो, प्रोग्रामर और टाइपिस्ट? सी, लिसन एंड थिंक। रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इज थिंकिंग नॉट टाइपिंग। अनफॉर्चुनेटली तुम क्या करते हो, प्रोग्राम बुक या नोटबुक से देखकर लाइन बाय लाइन टाइप करते हो। देखकर टाइप किया हुआ प्रोग्राम जब रन करते हो तब एरर आते हैं। जब एक एरर रिमूव करते हो तो यू गेट 10 न्यू एरर्स। ऑल दिस हैपन बिकॉज योर concepts आर नॉट क्लियर। You can't build your own logic because you write program only by typing, not by thinking. And one more thing, you don't know what is implementation. मतलब प्रोग्राम का लॉजिक हाउ टू यूज़ इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और एक बात, कभी आपने सोचा है आईटी कंपनी डिस्प्ले हेलो, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, फाइंड आउट और इवन नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर्स, इस तरह के प्रोग्राम के लिए आपको हायर करती है? नहीं ना। देन व्हाई यू स्टडी दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम? स्टूडेंट्स, जब तक आप अपना लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप टाइपिस्ट हो, प्रोग्रामर नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज लॉजिक। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो आइडिया क्लिक होता है वो है लॉजिक। सी, आई एक्सप्लेन दिस विथ वन सिंपल एग्जाम्पल टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर फ्रॉम फर्स्ट 100 नंबर। दिस एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर इन C++ in 2 ways. Look here. Look, in first type I use for loop to get first 100 number, and for each number condition check that number is completely divisible by 2 or not. If yes, then number display. Here loop rotate 100 times. Or in second type I use only for loop in which loop rotates only 50 times. Initialize by 2 and number increases by 2 each time, and we get all even number without checking condition. आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यू गेट सेम आउटपुट दैट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100 इन बोथ केस। लेकिन सेकेंड टाइप एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइप shows easy logic, less rotation of for loop and less line of code here used. Hence you get fast execution.
नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन. क्या है इम्प्लीमेंटेशन? क्या है ये इम्प्लीमेंटेशन? जो प्रोग्रामिंग तुम स्टडी करते हो उसका यूज़ किसी एप्लीकेशन के लिए करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन है. हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं. फॉर एग्जांपल, टू डिस्प्ले गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ये आप सबको पता है. बट स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ने इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया प्रिंटिंग एप्लीकेशन में. कैसे? देखो, मान लो 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए 50 प्रिंटिंग पेपर्स तुम सेट करते हो प्रिंटर में और प्रिंट देते हो. देन यू गेट प्रिंट टू वन साइड ऑफ पेपर एंड अदर साइड रिमेन ब्लैंक एंड all 50 pages print. But if we want to print to both side of paper, then you need only 25 printing paper. For this, logic of finding odd even page number is used. Only odd pages start to print to one side of paper when you click odd page option. After completing all odd pages, reverse that bunch of paper and select even page option. Now you get print of all even pages. That is page number 2 back to page number 1 and so on. ये है implementation. I hope you understand. Now, so student, in order to learn all these things, stay connected with us and subscribe us. Thank you for watching my this video.